Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. Let us for now do this question. So what is said in here? A cylindrical container of length 12 is rotating with an angular speed omega about an axis passing through its center and perpendicular to its length. We can see, right? It contains an ideal gas of molar mass m. Okay. Calculate the ratio of gas pressure at the end of container to the pressure at its center. Okay. So what will be pressure here and what will be pressure here? We have to take their ratios. And what else is given? Neglect gravity and assume that temperature of the gas throughout the container is same. Okay, so at constant temperature we have to do all these things and gravity we don't have to take into account. अब देखो यहाँ पे प्रेशर दोनों पॉइंट पे इक्वल क्यों नहीं होगा, डिफरेंट क्यों होगा? अगर ये रोटेट नहीं करता तब क्या होता? सो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है काफी ज्यादा। अगर आप देखो जैसे ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। तुम्हें पता है कि व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स इज एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, दे विल हैव सर्टेन मोमेंटम. Okay, and because of that momentum they will hit the container wall and this wall will feel the pressure. ठीक है, सो वॉल प्रेशर तो हमें समझ में आता है कैसे आ रहा है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे प्रेशर क्या होगा इनसाइड द वॉल्यूम एट एनी पॉइंट, सो कोई भी इमेजिनरी एरिया आप लोगे, इमेजिनरी एरिया इमेजिन करो, सपोज कर लो दिस इज वन एरिया, this area is getting hit by this molecule, molecule from this side also from this side, so overall you can say that this is also getting hit by the molecules of the same velocity, right? जो molecule यहाँ hit कर रहा है wall को almost and the molecule which is hitting this imaginary area, उनकी उनकी velocity में क्या होगा? Average velocity if we see that will be same, right? Because temperature throughout is what? Same. एंड टेम्परेचर इज व्हाट, एंड टेम्परेचर से वेलोसिटी क्यों सेम होगा? क्योंकि वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी मीनिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मीनिंग of molecule meaning self energy of the molecule, that is internal energy which is the function of temperature, right? So यहाँ पे at each point you will be getting same pressure that you will be getting on the wall. डन है। और अगर आप सोच रहे हो कि इमेजिनरी एरिया तो है नहीं, सो प्रेशर को आप कैसे बता रहे हो? तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं एंड दैट प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट। डन है, इसलिए मैंने इमेजिनरी एरिया लेकर वो बताया। सो बेसिकली ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड ड्यूरिंग द कोलिजन दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर, दैट प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर इस रीजन में कोलाइड किया है देन वी कैन से दैट क्लोजली स्पेस्ड इफ दे आर, देन दिस विल एक्ट एज द इमेजिनरी एरिया। सो लाइक दैट वी कैन टॉक। अब देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर ये मोशन में नहीं होता तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता, लेकिन मोशन में होने की वजह से क्या हुआ है देखो। आप भूल जाओ आइडियल गैस, सबसे पहले तो आप ये देखो, इफ दिस रॉड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, this point will have a velocity equal to how much? Omega x1. Let's say this distance is x1, omega x1. This point will have velocity how much? Omega x2, which is greater than this one, right? So inside this container, gas molecules starting from this point at the center and ending at this point will have different velocity, and because of which pressure is going to be different. Done it? And that difference in pressure, actually we have to talk about pressure ratio at this point and at this point. So how we can calculate it? चलो देखते हैं. So let's talk about here a small area of this container. तो मैंने ये area लिया, ठीक है? Of thickness, let's say dx I am taking. So this is of volume how much? ADX. Let's say this cross section area is A, so this is ADX. And it will have mass, right? So ADX into rho. Let's say rho is the density of gas. Is that given in the question? It's not given, right? Okay, we don't need to worry about molar mass दिया हुआ है m. Okay, okay, done है. No worries. So let's say this is this, so mass will be this one, and on this mass, since this mass is in circular motion of radius how much? Let's say this is x. So on this mass there will be some force acting which will provide it centripetal force in this direction. और यहाँ पे फोर्स लगाने वाला प्रेशर डिफरेंस ही हो सकता है, प्रेशर डिफरेंस एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट. सो लेट्स से दिस प्रेशर डिफरेंस इज dp. So force acting will be dpa and that has to be in this direction. Okay, so this has to be this direction. ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल के पास ज्यादा वेलोसिटी होगा, इधर का प्रेशर ज्यादा होगा इधर से. So net pressure is going to be in this direction. So net force because of this pressure is going to be in this direction. Okay. So force acting is how much? This is your dPA. Now dPA
this is force is equal to mv square by r or m omega square x. So m is how much? A rho dx I have written, and this into omega square x. Okay, so a will get cancelled, see here, and dp is equal to how much? Rho omega square x dx. If we have to calculate the pressure thing, so integrate karo aap, and pressure we have to calculate from where to where? From here to here. Okay, so this length will be L by 2. So dp, let's say here pressure is P naught. So this is P naught to P. Let's say at any random point it is P, and or we can say at x equal to L by 2 I have taken P. So x is equal to 0, then P is equal to P naught, and x is equal to L by 2, then I have taken P equal to P. Okay, so this is this. अब आप देखो यहाँ से if you see here density thing is there. Now we need to write the density. I mean before clubbing it like a constant we should remove it, क्योंकि density भी देखो different जाएगा. और density क्यों change करेगा? क्योंकि pressure is different, right? So density won't be constant, इसलिए इसको यहाँ पे लिखना will be mistake. ठीक है, so let us put it inside row. Okay. Okay, थोड़ा crowded हो रहा है. Let me rewrite it. So this is your what? Rho x dx. Why rho I have taken inside? क्योंकि rho is also a variable. I mean यहाँ पे if you see carefully, because of this rotation thing, more mass of molecule or more number of molecule will be crowded at the end. You can feel that thing. है ना? ऐसे आप अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लो, जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर आप देखो, तो हर सेक्शन पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है. So her section is getting thrown outward. So we can say that here accumulation of particle towards end will be more. Okay. So density is not constant. That is what I am trying to say. And if density is not constant, then in terms of pressure or pressure thing we need to write. So let us do this thing. अब देखो PV is equal to क्या लिखते हो आप? nRT. Temperature is what? Constant. And N is what? Number of mole. Okay. And P is pressure. Okay, which is variable. Volume V, चलो इसको V रहने देते हैं. N को आप क्या लिखोगे? Mass by molar mass. And this is RT. Okay. So यहाँ से P को आप क्या लिख सकते हो? I mean m by v, that will become density. So density by mRT. So density हमें क्या मिल रहा है? This is Pm by RT. This is your density. So density को आप पुट करो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, रो को आप क्या लिखने वाले हो? Pm by RT x dx. So this P variable we will take this side basically. So let us do that one. ओके, सो यहाँ पे ये कितना होगा तुम्हारा? दिस इज dp. ओके, सो दिस इज p नॉट टू p एंड दिस बाई p वी आर गेटिंग. ओके, सो इस p को इधर ला रहे rt बाई m. चलो यहीं पे लिखती हूँ rt बाई m, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? देन वी आर लेफ्ट विथ ओमेगा स्क्वायर x dx. ओके, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर x dx. सो सारे वेरिएबल को बहुत ही केयरफुली आइडेंटिफाई करना है हमें. ओके, सो दिस इज दिस थिंग वी आर डूइंग. Now RT by M dP by P will be equal to ln P. So ln P limit will vary from P naught to P. Okay. And this is equal to omega square. X dx will be equal to how much? X square by 2. And limit you will be putting from 0 to L by 2. Now let us put the value of limit and then see what we are getting. RT by M is equal to ln P minus ln P naught, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? P by P naught. And this is equal to omega square. एंड x का वैल्यू एल बाई टू रखोगे तो मिलेगा तुम्हें एल स्क्वायर बाई 4, और 2 पहले से है. सो एल स्क्वायर बाई 8. It is this one we are getting. So ln p by p naught is equal to how much? M omega square L square by 8 RT. So p by p naught is equal to how much? This is the ratio, and this is equal to e to the power m omega square L square by 8 RT. Okay, so this is going to be your answer. सो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें देखना क्या था? बिकॉज ऑफ रोटेशन प्रेशर विल चेंज, एंड सिंस प्रेशर इज चेंजिंग वी कैन conclude that density is not constant, right? Because of that crowding also pressure has increased along the rod length. Okay, so this is the case. और density को आप ऐसे भी explain कर सकते हो कि जैसे ये काफी नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है, आपके पास इसमें पानी हो, वाटर से आप फिल कर दो, फिर इसको एक रोटेशन दे दो ऐसे, यू विल फील लाइक अगर आपने यहाँ पे ढक्कन को टाइटली नहीं पैक किया है तो वाटर विल गेट थ्रोन आउट. डन है? सो somehow, I mean because of this rotation thing, this particle inside are getting thrown outward. Done है? And if they are not coming out, there is some force which is keeping it towards the center.
Okay, so that crowding thing ka possibility is always there, so that we need to keep in mind while solving this question. Okay, I hope this is clear, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, bye bye.